जॉब भी प्लेसमेंट रे से पॉसिबल था जो लागू था NIT राउरकेला में 100% प्लेसमेंट ओडिशा रे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के NIT राउरकेला आज जितने 100% जॉब न करी तापर से एमएस करिया को वाले डिग्री रे एमएस ओके सो पूरा 2 वर्ष डिग्री रे रह सकी एमएस की कंप्लीट करी पीएचडी भी ऑफर मिलता बट तापर आसी की ओडिशा रे सिविल सर्विस में प्रिपेयर करके अंडर 20 तेणु से आम कहले जो तुम ड्रीम अच्छी जो गोटे सिविल सर्विस कर ड्रीम अच्छी माने तुमको बहुत बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी छाड़ी कि तुम ए लाइन को से चूज करिका फाइनली सक्सेस तो तांको पार्टी सुनिबा जो तांकर जर्नी को बुझे दिला तांकर स्ट्रेटजी को बुझे दिला आउ केमिति से जो होल जर्नी रे उनको कैरी ओवर करिक फाइनली टॉप 25 aspirants for a new challenge. Odisha are going in with the biggest competition of the last. So welcome to Kalinga. So last कथा तो मेरे पहुंचे भी तो मैं सर्विस पर क्या दिला तो रिजल्ट बाहर ये मॉडल तो लाइक मोर टॉप में राष्ट्रीय वही तो पैकेज एग्जाम लेवल को मैंने से फीलिंग का टाइम फर्स्ट हमें क्वालिफाई एटलीस्ट करियो ताकि हार्ड वर्क एफर्ट नेसेसरी जाने की दरकार बट हमें एक्सपेक्ट करता हूं कि एटलीस्ट हमें जो हार्ड वर्क एफर्ट है रिजल्ट है गोटे वेरी एंड इफ दैट हार्ड वर्क इज अंडरस्टैंड वी आर थ्रू द प्रोसेस तो निश्चित पूरा को एक अपने एक्सपेक्टेशन दिला कि को वेरी एटलीस्ट गोटे सर्विस एलोकेशन इजो बा वो वेरी रिजल्ट फुलनेस का बड़ा सुंदर 23 रैंक का मतलब असला लगा कि so this is a reinforcement of my efforts, hard work with my parents, my sister, and everyone fraternity college were here to guidance. So that was the realization of my goal. So the way it goes, gratitude is the gratitude. So voice asuni, voice clear nahi na sir, voice clear asuni. एबे voice आसुची देखिलो सर आपन को वॉइस आसुची किंतु सर को वॉइस आसुनी कमेंट सेक्शन में को आसुची तो एबे वॉइस ओके ठीक अछि ओके सो बिफोर दैट हमें पिला मानन को तमरो जर्नी विषय हमें देखिबा जे NIT राउरकेला रे जो माने प्रथम तो स्वप्न देखंती पिला NIT राउरकेला रे पढियो and that too गोटे टॉप ब्रांच रे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रे पाइबा गोटे डिफिकल्ट थिंग NIT राउरकेला तमे इंजीनियरिंग पढिलो देन एमएस करिया कोलो इटली गलो मु जतो हम प्रोफाइल देखिल तो हमर एथि भी पैनल कहले जे एते हाईली माने क्वालिफाइड एते माने वेल रेपुटेड इंस्टीट्यूशन पाठ पढला परे हमकु कॉर्पोरेट लाइन छाडी की सिविल सर्विस लाइन को केमिति तमर ड्रीम मो मने अछि सेटा मोर जो मॉक इंटरव्यू एटी थिला तो पैनल चेयरमैन जे थिले प्रहराज सर तो सी मते क्वेश्चन ता पचारथिले कि डू यू थिंक यू आर अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विस लिविंग एन इंजीनियरिंग और टेक्निकल जॉब और रिसर्च लाइन आफ्टर मास्टर्स तो मो सेते बेले मो बाकी गोटे माने क्लियर कट आंसर नथिला माने बहुत माने स्ट्रांग आंसर नथिला तो मो कहितली कि मो जहा माने लर्न करली मोर एक्सपीरियंसेस गुडा का शेयर करली मो बा टीचिंग गुडा को मो कली मास्टर्स को सेटा मो यूज करि परिबी को ना को वेरे ओडिसा सिविल सर्विस तो से तो मते कहिथिले कि बट आर यू श्योर यू विल बी गिवन दैट प्लेटफॉर्म व्हाट यू वांट जेटा तुम किछि भी अलॉट हे जाय पारे तो सेते बेले मो माने तक माने इंटरव्यू रे जति भी डेज थिला गैप तब तापर आउथर मो निजे को भाबिली कि व्हाट वाज माय रियल पर्पस तो सेठी मो रियलाइज करली कि माय रियल पर्पस वाज नॉट जस्ट सिक्योरिंग सम गुड फैंसी और माने जॉब कॉर्पोरेट जॉब जोटी हाई पेइंग जॉब बा मु जोटी बहुत माने इनकम करि परिबे एंड प्रेस्टीज जोटी मिलिबो रादर मोर गोटे माने से इंट्यूशन डे आसीला कि माय प्राइमरी गोल इज पब्लिक सर्विस बिकॉज़ सेठी थाइकरी मु आई कुड हैव डन एवरीथिंग बट नॉट फॉर माय सेल्फ फॉर माय कंट्री और फॉर माय स्टेट एही से मीनिंगफुलनेस एंड जे गोटे माने सैटिस्फैक्शन फीलिंग ता आसे कि ओके व्हाटएवर आई एम डूइंग within my capacities is directly applicable and directly transforming the lives of people of the state so सेटा मोर गोटे माने मेजर फैक्टर थिला जोटा कि मु माने भाबिली कि I should be inspiring and motivating me for civil services and सेटा in fact मोर रियल इंटरव्यू रे भी सेटा मते पचार थिले
ब्रीफली मु तांको सेटा कहिथिले कि मोर रिन्यूएबल एनर्जी ऊपर मोर एक्चुअली थिला स्पेशलाइजेशन तो सेटा मु कहली रिन्यूएबल एनर्जी को केमिति यूज करिकरी वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स को इंटीग्रेट करिके केमती हमें ओडिसा रे जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज अछि जोटा कि वेस्टर्न ओडिसा रे सोलर पोटेंशियल अछि कोस्टल ओडिसा रे केमती हमें अपलिफ्ट करि परिबा so say socio-economic reasons गुड़ा को मु माने mostly देइथिली as a मोर आंसर and probably they were convinced so I could get and तांकर जो ए वर्ष जो ओडिशा सिविल सर्विस जो इंटरव्यू हेतला सेकंड हाईएस्ट मार्क मिली छी ओम सरन को माने 167 टॉप तांकर ओम कर अछि 166 जोटा कि सेकंड हाईएस्ट इन इंटरव्यू कारण ए वर्ष बहुत माने पिलान को ओडे रेंज भीतर देइ छथि लाइक 170 भीतर मार्क दिया छी तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत भलो मार्क मिली छी सो नाउ जदि हमें प्रिपरेशन जर्नी को देखिबा जे सिविल सर्विस रो जो तीन टा फेज रहउची गोटे टाइम गोटे लेंथी टाइम हमें रहउची प्राय वर्षे पाखा पाखी प्रिपरेशन रहउची सो प्रीलिम मेन इंटरव्यू फास्ट जो माने कि नुआ किनी प्रिपेयर करूछंदी और सिविल सर्विस प्रिपेयर करिया को प्रथमे चाहउछंदी तो केमती सेमानकर अप्रोच रहइबो प्रीलिम पई कोन केमती प्रिपेयर करिवे देन विल कम टू द मेन देन विल कम टू द इंटरव्यू तो प्रथमे जो माने सिविल सर्विस प्रिपेयर करिया को चाहउछंदी तो जो मानक पाखरे जे कोठु कोन पढिबा कोन करबा तो केमती जणे गोटे अप्रोच रहिबा टुवर्ड सिविल सर्विस को प्रिपरेशन एथु स्टार्ट कर so it would both a valid and legitimate question because mo jetore transition करथली from engineering towards civil service so मोर पाके बैकग्राउंड किछि नथिला सिविल सर्विस रा ना मो पाके से सब्जेक्ट्स मानकर मास्टरी भी थिला जो ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट सब्जेक्ट हम पढु तारा किछि नथिला so से डाउट ऑब्वियसली मो पाके फर्स्ट आसीथिला एंड से हर्डल्स भी मु फर्स्ट अटेम्प्ट फेस करिथिली जोडी कि मु भाबुतली कि एवरीथिंग अंडर द सन इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो माने किछि आज न्यूज़पेपर बाहरी गला किछि न्यूज़ रे देखि देली मु कोडी कोन सुनि देली यूट्यूब रे कोडी देखि देली तो भाबुतली सेटा ही माने सिविल सर्विस रे आसीबो एंड सेटा मु टिके मास्टरी कर दे लिखि दे पढि दे घोष दे भी हेजी तो अल्टीमेटली फर्स्ट अटेम्प्ट दैट डिडंट माने मु क्लियर करथली प्रीलिम्स बट मेंस रे से हर्डल मु फेस करथली the prelims pai I'll specifically tell you start with your foundation with strengthening your foundation so strengthening foundation should start from the basic NCERTs because NCERTs guda ko mu kohoni ki they will help you crack the exam but they will create such a strong foundation ki seta padhila pare next advanced book jo apne respective subjects ro padhibe sera apun pura mane in depth mastery hisab re apun ko sera clear he तो फॉर एग्जांपल मु कहबी ज्योग्राफी रो 8th 9th रे एनसीईआरटी रे आपन को सॉइल्स ऑफ इंडिया क्रॉप्स ऑफ इंडिया इन चैप्टर्स उडा को अछि बट दोस आर नॉट पार्ट ऑफ मेन सिलेबस माने एक्सक्लूसिवली आपन को अछि एग्रीकल्चर एज ए सिलेबस तो कोन करबे प्रीलिम्स पे जेतो आपन पढुतबे 8th 9th एनसीईआरटी से कवर करि देले आपन देखि परबे एग्रीकल्चर रो गोटे पार्ट सॉइल कवर हे गेला क्रॉप्स कवर हे गेला तपर आपन तांको इंटीग्रेट करि परबे जेटा हमें मेंस रे डिस्कस करबा कि केमती इंटीग्रेट करि कि से फाउंडेशन उडा को ऑनलाइन रिसोर्सेस वाला न्यूज वाला करंट अफेयर्स वाला क्लाइमेट एबिलिटी सुपर एल निनो आसुची तो माने क्लाइमेट चेंज इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर आल्सो दैट इज अ ह्यूमन फैक्टर क्लाइमेटिक फैक्टर आल्सो इन्वॉल्व हमर तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आल्सो तो हमें केमिति एनसीईआरटीज रो स्टार्ट करी करी बेसिक बिल्डिंग करबा सो दैट हमर गोटे एनालिटिकल अप्रोच to डेवलप हबो बिकॉज़ आजिकल अपन प्रीलिम्स जो माने न्यू भी देखिबे डायरेक्ट माने 1-to-1 क्वेश्चंस एंते आसुनी it is always analytical it is always lengthy and it is no more factual in nature तो से analytical ability को build करा पे हले आपण को prelims अलगा mains अलगा एंती पढी परिबे that will require strengthening your foundation and then building on the concepts with your advanced books or with the coaching institute that you are enrolled in so NCERTs and revising those will be the first strategy okay. so प्रीलिम जेतले हम पढला परे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केते इंपोर्टेंस रहउची जेतले हम गोटे टॉपिक पढुचे यूपीएससी हो ओपीएससी हो तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करबा केते इंपोर्टेंट एंड टेस्ट सीरीज करबा केते इंपोर्टेंट एंड करंट रिलेटेड जो सोर्स उडा को हम केमती प्रिपेयर करबे ओके सो मोर पर्सनल एनेक्डोट जदि मु कहबे मो किछि मैगजीन्स बा किछि माने करंट अफेयर्स कंपाइलेशन सेंते मु किछि फॉलो कर नथली एंड टू बी वेरी फ्रैंक मु न्यूज़पेपर्स भी एक्चुअली पढु नथली एक्सेप्ट जे द हिंदू रे एक्सप्लेन्ड पेज जो लास्ट को आसे सेटा बहुत साइंस एंड टेक और एप्लीकेशंस बेस्ड था तो सेट पार्ट मु पढथली एडिटोरियल कभी कभार मु पढि होथली सेंते बट मोर मेजर सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स बा जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल न्यूज़ सब थिला सेटा हला गोटे आपण जानिथिबे गोटे चैनल आसे फर्स्ट पोस्ट बोली कि कल्की शर्मा कर एडवांटेज से शोटा आसे एंड सेटा गोटे मते लागे कि अदर देन बीइंग ए न्यूज़ चैनल सेटा गोटे माने
एस्पिरेंट्स मान को पई जेमति किछि भी जिंस को एनालाइज करिया कोले पॉइंट वाइज आपण चिंता करंती प्रेजेंट केमति करंती सेटा ग्राफिकल इन्फोग्राफिकल फॉर्मेट रे तो सेटा मते बहुत हेल्प करथिला. So first post was the news that I was watching during my dinner time because at 9 to 10 सेटा लाइव था. सेकंड जिंस आउट करथली मु सोशल मीडिया रे मु जोडी भी प्रेजेंट अछि सेठी मु बहुत सिलेक्टिवली एमते चैनल्स मान को फॉलो करथली जोडा कि हमर सिविल सर्विस जर्नी रे हेल्प करबे. फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमर ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से बहुत जगह जानती सब बेले जानती बहुत माने कथाबार्ता करती से गुड़ाक इंडिया रो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस इंडिया रो डिप्लोमेटिक रिलेशंस कोडी कोडी कोन ट्रीटीज हला सेटा मते हेल्प करे. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रो मु वेबसाइट को फॉलो करे तो एवरी माने ईयर रे जो पीरियड्स रे सेटा हमर कल्चरल माने जेंति कि रिपब्लिक डे रे हमर थीम थिला एथर द फैब्रिक्स ऑफ इंडिया एंड से गुड़ाक मु फॉलो करतो माने बहुत इंफॉर्मेशन गुड़ाक मिले मते से चैनल्स रे. तो करंट अफेयर्स में मोर न्यूज थिला एंड सोशल मीडिया को बहुत माने सिलेक्टिव वे रे यूज करे सेटा मोर माने मेन फोकस थिला. And other than coming to the role of PYQs, मुझे obviously कोई भी since the trend has changed, मैंने prelims हो कि mains हो, prelims रे more analytical है गलानी, mains टा more current affairs and मैंने in depth है गलानी. So prelims में आगुरा में एमती मैंने घोसी की पढ़ो थले, सेमती हाँ बनी, you have to know Odisha. मैंने know Odisha, but in the sense अपन देखी परिवे question आस्तिला the economic scenario of Odisha. सेठी केमिति माने को सेक्टर सोडा को एग्रीकल्चर हला इकोनॉमी केते परसेंटेज अछि काहे की कम अछि स्ट्रक्चरल चैलेंजेस कोन कोन अछि तो सेटा पय के हले पीवाईक्यूज अपन जदी करि परिबे अपन पढिला बेल को भी सेमति एनालाइज करिवे एनी न्यूज़ पीस को अपन केमति बजट हला इकोनॉमिक सर्वे हला तो अपन जस्ट फिगर्स केते परसेंट केते माने कोन पार्ट होला सेटा न पढि करी देखियो जति की परसेंट अछि काहे की अछि केते वर्ष हला अछि कोन कोन चैलेंजेस फेस करछि तो एनालाइज इन अ वेरी माने स्ट्रक्चरल वे तो से पीवाईक्यूज रो अपन जानि परिबे और जे जदी पीवाईक्यूज बिना खाली माने यूनिलैटरल वे रे पढि चलबा सी ओडा जीके भले आइ जीवो सिविल सर्विस प्रिपरेशन हे परिबा सो दैट इज इंपोर्टेंट एंड हम जेमति देखिबा मेन एक्चुअली टोटल फाइट होछि मेन रे रैंक हमकु दोछि मेन जदी देखिबा मेजर पोर्शन ऑफ योर गेटिंग रैंक होछि डिसाइड करछि मेन रो प्रिपरेशन. सो मेन रो प्रिपरेशन रे केमति जणे हम देखुचे एते वास्ट कोर्स जीएस चारिटा हमरो जीएस पेपर रहला 1 2 3 4 एसे देन ऑप्शनल पेपर रहला तो ताकू हमें केमति प्रिपरेशन करबा मेन पर्सपेक्टिव जणे केमति प्रिपेयर करबा. ओके सो मोर फर्स्ट अटेम्प्ट रे मु मेंस रे एक्चुअली 5 मार्क्स रे मु कटि जायतिले एंड द प्राइमरी रीजन जोटा मु माने इंट्रोस्पेक्शन कला परे सेकंड अटेम्प्ट रे मु जानि पारली कि मु भाबुतली एवरीथिंग अंडर द सन इज पार्ट ऑफ द सिलेबस माने मु जेमति आपन स्टार्टिंग कहले मु किछि भी कोडी पढि होतली भाबुतली अरे एटा द टॉपिक आसी पारे करंट अफेयर्स रे अछि तो मु केमति पढिबी सो सेटा मते 40 to 50% हेल्प करथिला एग्जाम रे बिकॉज़ किछि क्वेश्चंस बाजी भी थिला बट मेजरली जदी जणे मेंस को डेडिकेटेड वे रे प्रिपेयर करे पड़िबो तो देयर आर 3 स्टेप्स एक्चुअली. फर्स्ट हला लुक एट द सिलेबस अपन जो स्टडी टेबल पढछंती तीनटा कंपोनेंट रहबा दरकार. फर्स्ट सिलेबस so that अपन it will ensure that अपन को प्रिपरेशन टा गोटे फोकस एंड डेडिकेटेड वे रे होची. सेकंड हला अपन को पीवाईक्यूज रहबा जे मु प्रीलिम्स रे भी कहली मेंस में भी बहुत इंपोर्टेंट इट विल गाइड यू इन हाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द एथर लास्ट ईयर पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड आस्तला जीएस पेपर रे. एंड थर्ड जिंस हला if you have access to topper copies or value addition or content enrichment materials जोटा कि current affairs रो आपण पाई परिबे सेटा निश्चय रहबा दरकार. एंड मो सर को भी सुनुथिले से गोटे सेशन आपण कहउतले एथर माने जे आंसर लिखिबो ताको मार्क मिलबनी रादर जे क्वालिटी आंसर लिखिबो ताको ही मार्क मिलबो. सो से क्वालिटी आंसर रो मीनिंग ता हला जोटा कि वैल्यू एडेड थिबो कंटेंट पूरा फुली एनरिच थिबो बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. मो जदी एग्जांपल देबी आपनकर जीएस2 रे आपनकर अछि गवर्नेंस गोटे अछि दैट्स ओडिसा रो गवर्नेंस माने आर्किटेक्चर ता केनका धीरे धीरे इवॉल्व होची ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. हमर करंट अफेयर्स आमे देई परियो कि नीति आयोग जेमतिया थिला एबे गोटे सिटी बोली कि गोटे इंस्टीट्यूशन आछि तो सेटा अपन जदी ताकू पढी थिबे ताकू कोट करि परिबे एज एन एग्जांपल ऑफ हाउ ओडिसा इज टेकिंग मोर सिटीजन सेंट्रिक डाइवर्सिफाइड एंड फेडरल अप्रोच ऑफ गवर्नेंस तो सेटा अपन को निश्चय मार्क्स फेच करबो एज कंपेयर टू जे खाली लिखिबा कि ओडिसा रे इवॉल्व हेची एंड से बहुत इंप्रूव करची एटा लिमिटेशंस एंड दिस द वे फॉरवर्ड दैट विल नॉट गिव यू मार्क्स. सो ए फोकस्ड वे इन सर जेमति कहले कि डिफरेंट जीएस पे एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ ये हुए मो जीएस2 पई आउ माने ये पई कहि परि फर्स्ट ऑप्शनल पई बिकॉज़ मोर जीएस2 रे माने फेयरली डिसेंट मार्क रछि 136 एतरो मु कोन कोतली मोर मेन सोर्स ऑफ कंटेंट एनरिचमेंट वाज सुप्रीम कोर्ट केस लॉज
बिकॉज पॉलिटी हो कॉन्स्टिट्यूशन हो गवर्नेंस सोशल जस्टिस एंड वो एम्पावरमेंट से पार्ट रे अपन जते बेस्ट प्रैक्टिसेस दे परिबे इनफैक्ट देयर इज वन वेबसाइट कॉल्ड द बेटर इंडिया अपन जानिथिबे तो से बेटर इंडिया वेबसाइट रो अपन जते माने केस स्टडीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करि परिबे दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू सुप्रीम कोर्ट केस लॉज एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस रे यूज हे परिबे अपन जदि माने भल से देखिबे फॉर एग्जांपल आरटीआई रो क्वेश्चन हमर को आस्तिला यू कैन इजीली कोट अंजलि भारद्वाज केस आपनकर फाइनेंस कमिशन रे आसिला आप यूज करके मोहित मिनरल्स केस अच्छी बहुत सारा केस फेडरलिज्म ପାଇଁ ଅଛି गवर्नर केस यूज କରି परिबे तो these are the small things जोटा पे एफर्ट बेसी लागिवनी बट हाईली रिवार्डिंग इन नेचर सेकंड हला एसए ପାଇଁ तो एसए ପାଇଁ आई वुड से मोर एसरे तमरो एथरा माने वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क अछि 140 मार्क एसए रखि जंती तेनु एसए रे माने मु से क्वेश्चन पचारे जेथन जे कोन जोटी पिला माने 110 115 रखुछन 20 25 मार्क गोटे प्लस ता जोटा कि ह्यूज माने जण को 100 रैंक रो 20 30 रैंक भीतर को नेके एस परिबो सो एसरे तमर स्ट्रेटजी कोन थिला कोन कोन तमर डिफरेंट अप्रोच थिला एसरे ओके सो एसए ପାଇଁ मु कहि परिबो मु कंसिस्टेंटली माने लास्ट अटेम्प्ट ए अटेम्प्ट माने गोटे फेयरली डिसेंट मार्क रखछि तो मु कॉन्फिडेंटली कहि परिबो कि गोटे अप्रोच मोर ପାଇଁ काम करथिला ताले सेटा थिला कि बिकॉज पिला माने यूजुअली जीएस पढ़ला पर एसए को अप्रोच करा पे जानती असमान भाबंती कि मो पे कुछ कंटेंट आसिले मु जाके एसए टा लिखि परिबी अदरवाइज माइंड टा ब्लैंक हे जाय तो तारो गोटे प्लस पॉइंट अछि तारो माइनस पॉइंट अछि प्लस पॉइंट हला ऑब्वियसली कंटेंट मिलुछि माइनस पॉइंट हला से माने एसए लिखला को से जीएस वाले फैक्ट्स वाला को डंप कर दे माने पूरा गोटे जीएस2 पेपर वाला गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल एमती लिखि देकी पढांती तो एग्जामिनर को भी लागिबो कि अरे गोटे टेक्निकल पेपर हे गला सेटा तो पुन तापर लागे कि अरे 4-5 पेज रे मोर कंटेंट खत्म हो जाउची मु खाली बाकी पेज रे टाणुची भला लागे तो तार सॉल्यूशन टा मु कोन करथिली कि rather than putting out so many facts in my essay paper मु माने जेतु प्रोज एंड कॉन्स टू एंड फ्रो अलग अलग डायमेंशंस लिखिबा को पड़े essay टा मु ट्राई करथिले आर्गुमेंट गोटे डायमेंशन रो ओनली 2 to 3 ही रखिबी हमर लास्ट ईयर एआई ऊपर पढ़तिला बा एई वर्ष देखियो फिलोसॉफिकल कोट्स पढ़तिला द गोटे इफ आई रिमेंबर द टॉपिक सन इज न्यू ईच डे यदि आपण देखिथिबे टॉपिक्स इसे रो द सन इज न्यू ईच डे पढ़तिला फिलोसॉफिकल तो सेठी मु फर्स्ट ला डाइसेक्ट कर देथिले कि सन इज न्यू ईच डे रो मीनिंग टा कोन तार अंडरलाइन मीनिंग टा हला हमें हमर भूल लु सिखुचे कि सिखुने सिखि के आकु केमती बढ़ुचे तो सेटा मु जो सेग्रीगेट कर देथिली सेठी मु भाबिथिले कि मु जस्ट दि तीनटा एग्जांपल्स यूज करथिली गोटा हला हमर से जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लो केमती मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स को ट्रांजिशन हला हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें माने ग्रेजुअली इंप्रूव कले तापर आउट टाइम यूज करली हमर एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेशंस हमें जोटा करू कि हाउ ए बर्ड कंटीन्यूअसली बिल्ड इट्स नेस्ट्स से भांगी जाए डिजास्टर रे पुणी से बिल्ड करे से लर्न करे इंप्रूवाइज करे तो सेमते छोटे छोटे एग्जांपल्स मु डिफरेंट डायमेंशंस मु देथिली एंड तापर तार अलग डायमेंशन को भी मु फोकस करथिली तो एडा एंश्योर हला कि मोर आर्गुमेंट टा बड़ हबो इंस्टेड ऑफ मोर फैक्ट्स बेसिक माने सेठी पुट आउट हबो तो फैक्ट्स पुट आउट न करी कि मु से गोटे गोटे जिंस को इलाबोरेट करथिली तो जरा फिलोसॉफिकल पे गोटे रीडिंग पे भी भल लागबो एग्जामिनर को मोर कंटेंट भी माने फील हला प्लस एनरिच भी हेगला एसेटा तो एसे पई मु सेटा यूज करथिली एंड लास्ट ऑब्वियसली आपण मु एंड करथिली सब बेले गोटे कोट रू माने गोटे संस्कृत रो कोट थिला बा कोन मु सेटा कंपाइलेशन से एसे पई रखिथिली कि एनवायरनमेंट रो आसिला कि फिलोसॉफी आसिला वुमेन पे आसिला सेटा पई मैं यूज करथिली लास्ट कोट्स बट मेन कंटेंट ऑफ द एसे शुड बी टू elaborate your dimensions rather than putting more dimensions and writing less so that was I think what worked okay and केमती हमें ऑप्शनल कहले ऑप्शनल गोटे भी very important जो सेक्शन रहू छै जो 500 मार्क्स का रखे एंड लास्ट ईयर देखिबा जदी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तमर ऑप्शनल थिला तो ऑप्शनल पई केमती तमे प्रिपेयर करथला कोन गोटे ऑप्शनल को केमती अप्रोच करबे कारण बहुत पिला भाबंती जे जीएस रे जेमती की लागिबो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिटिकल साइंस हला सेथे तो पॉलिटी अछि एथरे भी पॉलिटी अछि सेथे भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एठी भी तो सिमिलरली जीएस टाइप रो लिखि देंती गोटे ऑप्शनल को हमें लिखिया पई को अप्रोच रे लिखिबा दरकार माने जो भला जीएस रे जेमती बुलेट पॉइंट लिखुछन सेमती लिखिबा दरकार और ता पई कोन डिफरेंट अप्रोच देन जीएस तो मु जेमती जीएस पे भी कहली कि माने गोटे फाइन लाइन सेपरेट करे अपन कोनसी भी ऑप्शनल नियंतु सेटा कोनसी न कोनसी जीएस सब्जेक्ट रे सोशियोलॉजी हला जीएस1 रे ओवरलैप करे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपन लेबे सेटा जीएस2 पॉलिटी गवर्नेंस रे ओवरलैप करे पीएसआई भी सेमतिया तो इट इज एप्लीकेबल टू एवरी ऑप्शनल के आपनकर किछ ना किछ माने ओवरलैप रहउथो किंतु से डिफरेंशिएटिंग फैक्टर टा मार्क्स रे आसीबो जते बेले आपण ऑप्शनल रो आंसर टा को एनरिच करिवे जोटा आपण ऑलरेडी ऑप्शनल रे ही पढुथबे
आपण समस्त कहते कि इंटीग्रेट करंतु बोली तो इंटीग्रेट करबा चक्कर रे मोस्टली एस्पिरेंट्स माने कोन करंती से माने डायरेक्टली लक्ष्मीकांत रु धर आपण पढुचंती लक्ष्मीकांत रु आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज डायरेक्टली प्लेस कर दियंती तो पर्सनली स्पीकिंग मोर पबैड ऑप्शनल थिला जदी कार एट थिबो देन दे कैन रिलेट मो फर्स्ट अटेम्प्ट रे मो इनफैक्ट जीएस माने पेपर 2 रे मोर माने लोएस्ट मार्क थिला 109 थिला दैट वाज द मेन रीजन मो पूरा जीएस 2 बळे लिखि देथिली बट एबे मु इंप्रूव करि पारली बिकॉज़ मु सेठी थिंकर्स केस स्टडीज कमिटी रिपोर्ट्स करंट अफेयर्स सेडा को मु इंटीग्रेट करली बोली एंड ऑप्शनल प्रिपरेशन गोटे माने मु कहबी गोटे सेपरेट डिग्री भले एक्चुअली पढ़िबा कथा माने इनफैक्ट सिलेबस रे भी नोटिफिकेशन भी लिखा थाए कि गोटे हायर डिग्री ऑनर्स डिग्री भले पढ़िया पड़े सेटा तो अपन सेटा इवन दो ऑनर्स डिग्री 2 वर्ष धरि पढ़िबेनी बट ताको एते इन डेप्थ रे पढ़िबे कि आपण माने टेक्निकल लागिबनी बट सेटा फुल ऑफ कीवर्ड्स ऑफ दैट ऑप्शनल ही थिबो सेटा तो पबैड ऑप्शनल मु माने गोटे अलगा माने ऑनलाइन ही कोचिंग नै थिली मु टेस्ट सीरीज रे भी सेठी एनरोल थिली तो सेठी आंसर राइटिंग प्रिपरेशन आ माने वैल्यू एडिशन सेटा सब करा होतला तो सेटा एंश्योर करला कि मु मोर आंसर टा माने रूटीन न ही जाय कि माने जेनेरिस्टिक न ही जाय कि गोटे डिस्टिंक्ट आंसर टा रहंता तो ऑप्शनल पई कि मु देथली ऑलमोस्ट आफ्टर माय प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स तो मु 6-7 मंथ्स तो देथली बिकॉज़ ऑप्शनल इज द डू और डाई एंड बिकॉज़ द रेंज भी बहुत जेतु वेरी करे तो इट इज बेटर तमे जते माने ताको प्रिपेयर करी कि करंट अफेयर्स तो इंटीग्रेट करि परिबो जस्ट लाइक अदर मेंस पेपर्स तो दैट विल हेल्प यू इन योर ऑप्शनल पेपर दैट वाज माय स्ट्रेटजी ओके सो आउटे मोर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होछि जे जर्नी ता एते अनसर्टन जे प्रीलिम रे माने कटि जवार भी चांस अछि पुनी मेन राउंड रे जाई कि को सेक्शन रे भी कटि जवार अछि सो एते अनसर्टनिटी भितरे पिला अछन जो माने कि प्रीलिम पास करछन मेन पास करछन इंटरव्यू को जाई कि भी फाइनली 2-3 थर हमरो से माने फ्यू मार्क रही जाइछंती तो जेतोळे हमें गोटे फेल्युअर होउछे तो सेटा हमको कोठी ना कोठी पक्ष को टिके टाणी नै हमरो डिमोटिवेशन क्रिएट करे तो ए अनसर्टेनिटी भितरे जेतोळे हमें सेटबैक फेस करूचे सेथिरे हमें निजको केमिति मोटिवेट करी कि जे आगो के जर्नी रे हमें पुनी हमर ड्रीम रे पहुंचबे एक्चुअली मु कहयो चलछि एक क्वेश्चन सर एक्चुअली फर्स्ट ही पचारिबा कथा बिकॉज़ जर्नी अनसर्टेन एंड आपण माने समस्ते माने ई जर्नी रे एम्बार्क करिसंती सेटा ही वन ऑफ द माने बिगेस्ट एनकरेजिंग एंड मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर because that requires guts, that requires courage, and that requires also dedication from your part. तो जेतु uncertain journey तो एठी गोटे जिंस मैटर करे सेटला आपन को मेंटल हेल्थ बिकॉज़ अनसर्टेनिटी तो कोठी भी था ना इनफैक्ट करियर रे आपन जॉब भी जोटी नेक्स्ट करिवे सेठी को अनसर्टेनिटी आसे प्रिपरेशन रे भी अछि सो एवरी स्टेज रे रहबे तो बट वन थिंग दैट शुड रिमेन कांस्टेंट is how you handle your mental health, is how you stay resilient in the face of adversities. तो सेति पई कि मो जदी पर्सनली कहबी तो actually I play badminton at the माने यूनिवर्सिटी लेवल खेलतली and I also do sketching मो आर्ट्स पेज भी अछि तो एवरी माने मो रूटीन टा जो थिला एवरी 2 to 3 आवर्स ऑफ स्टडीज परे मो किछि माने बैडमिंटन रो जो वर्ल्ड कप माने वर्ल्ड फेडरेशन वीडियोस मु सेटा देखुतली बा मु किछि ऑब्जर्व धर करली मु घर बाहर माने विंडोज रो नेचर रे किछि ऑब्जर्व करली तो सेटा मु स्केच करतली रफ स्केच एंती कर दोतली तो सेटा मते हेल्प करतला ଗୋଟେ पर्सपेक्टिव आनिया पई कि इट वाज आल्सो काम डाउन भी करतला तो स्पोर्ट्स एंड बा आपन का हॉबीज बा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू इंडल्ज व्हाइल यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन दैट सेकेंडली आपन को हेल्प करिबो आपन का इंटरव्यू रे डेफिनेटली बिकॉज़ आपन जदी किछि भी माने एंगेजमेंट रे रहउचंती तो आपन गोटे पर्सनालिटी बिल्ड करे बिकॉज़ आपन सेटा सबकॉन्शियस माइंड रे थिबो आपन सेटा ता विषय भाबुतबे ता विषय रिसर्च करूतबे पढुतबे तो आपन तो हॉबीज रे लेखिबे एंड जेतेबेला आपन को पचारिबे भी माने इंटरव्यू रे ता विषय बहुत माने इंटरव्यूज डीप भी करंती तो आपन सेटा को एक्सप्लोर करि परिबे सेकंड जिंस हला मु कहबे कि ऑलवेज माने जदी जहार भी एठी माने मोर देन 2 or 3 अटेम्प्ट्स हे गलानी प्लीज हैव ए प्लान बी व्हाइल स्टडीइंग बिकॉज़ यूजुअली हमें को कि प्लान बी ता गोटे माने वीक एस्पेक्ट थाय प्रिपरेशन जो माने मेंटली रेजिलिएंट नथांती से माने प्लान बी रखंती बा जो मानकर एज बहुत हे गलानी से माने भाबंती कि आई हैव नथिंग टू डू एनी मोर आई विल जस्ट गो एंड डू एनी अदर जॉब तो सेति भाई मु कभी प्लान बी प्लीज रखंतु इनफैक्ट एबे पब्लिक पॉलिसीज रे गवर्नेंस रे कंसल्टेंसीज रे बहुत सारा माने प्राइवेट सेक्टर रे भी जॉब्स उडा का इमर्जिंग होची बट दैट विल रिक्वायर वन थिंग दैट इज अपस्किलिंग तो आपण जो भी फील्ड रे माने इंटरेस्टेड अछंती तार अपस्किलिंग निश्चय करंतु एंड opportunities obviously will open its door if you have the resources and the mindset so mo pai eta hi thila hobbies and just indulging in small things आउटे होची जे जेतले प्रिपरेशन हमें करूचे
ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଡର ଥାଏ कि ଯଦି ଏଥର ନହେଲା और फियर ऑफ फेल्योर थाए तो सब बेले से फियर ऑफ माने मु देखिछि पिलांकु जेतेबेले प्रिपरेशन स्टार्ट करंती गोटे हाई एनर्जी रो सहित जे देखिबे कि मो गाँ रो कि मो एरिया रो कि मो स्कूल रो जन को देखि कि से मोटिवेशन टा आसे प्रिपरेशन करिया पई एनर्जी लेवल टा बहुत हाई थाए जेमिति जेमिति टाइम टाइम जेते बढ़ी बढ़ी चले से भले हमर धीरे धीरे से एनर्जी लेवल टा डाउन थाए एंड आफ्टर प्रीलिम बेल को आउट के कम थाए देन प्रीलिम पर तले मेन बेल को भी आउरी हमें प्रेशराइज हे रही जाए गोटे अनसर्टेनिटी भितरे तापर डर लागे कि यार नहेले कोन हो फियर ऑफ फेल्योर तो ए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ए फियर ऑफ फेल्योर को केमि हमें हैंडल ओके सर जोटा फियर ऑफ फेल्योर कोचंती सेटा मे बी जेन जी टर्म रे फोमो बोले कि हमें को फियर ऑफ मिसिंग आउट फियर ऑफ मिसिंग आउट फ्रॉम द फाइनल लिस्ट तो सेटा तो गोटे बहुत नेचुरल जिंस जदी आपन को भी सेटा आसुची देन कंसीडर योरसेल्फ ए नेचुरल एस्पिरेंट माने जस्ट हु इज फॉलोइंग हिज और हर पाथ तो तापई गोटे जिंस हला आपण हम इनफैक्ट जदी आपण एथिक्स प्रिपरेशन करूथबे तो आपण पढुथबे कि निष्काम कर्म करबा कथा भगवत गीता रे लिखा होइछ सेटा आपण यूज भी करि परिबे आपण एथिक्स पेपर रे तो प्लीज फोकस ऑन योर ड्यूटीज आपण आजि जदी पढुचंती फॉर एग्जांपल आजि रे जदी किछि डेडलाइन सेट करचंती तो सिलेबस रे एई पार्ट टा आजि कंप्लीट करबा अछि बा जीएस 2 रो 3 रो किछि इंटरनल सिक्योरिटी हला गवर्नेंस रे लक्ष्मीकांत एई चैप्टर टा कंप्लीट करबा अछि सेटा आपण माने फुल फोकस एंड फुल अटेंशन रे सेटा की कंप्लीट करंती तो आपण जानिबे कि आफ्टर कंप्लीटिंग दैट चैप्टर टू सम एक्सटेंट से फोमो पार्ट टा आपन को पड़े जाइथिबो बिकॉज़ आपण ड्यूटी को बेसी माने अटेंशन दोचंती कंपेयर टू कंटेम्पलेशन कि कोन हबो न हबो सेटा तो तार माने जो कोंती कि कंटेम्पलेशन रो गोटे मात्र माने डिफेंस का हला एक्टिविटी सो इफ यू डू इट then you can just delay that contemplation so obviously माने तार solution टा हला कि just माने focus on what you are doing currently focus on completing that days to do list जोड़ा अपन को अच्छी सेटा कंप्लीट करंतु एंड पैरेलली भी ऑब्वियसली जो माने एक्टिविटी करी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अपन एंगेज होचंती सेटा करंतु एंड के भाबंतुनी कि ए एग्जाम इज बिगर देन मी और बिगर देन माय लाइफ इट इज एक्चुअली नॉट अपन रियलाइज करिवे गोटे फेज परे कि ए एग्जाम को क्लियर करिया पय कि किछि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट बा एबिलिटीज दरकार नै बट बहुत ऑर्डिनरी रूटीन दरकार बट विथ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन बिकॉज़ पीपल हैव नॉट क्लियर्ड इट माने जो माने बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड जो माने अछन से माने क्लियर करनांती बट बहुत ही बोरिंग रूटीन गुडा का day in day night for 365 days they have followed it so that is I think the success mantra I will say okay so जेमति कहलो कि कंसिस्टेंसी तो डेढ़ वर्ष में गोटे परीक्षा दोचे धर अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुडा अछि शॉर्ट टर्म एग्जाम 2 मास 3 मास पर एटा हलानी आउट फोकस करबे सेटा हलानी आउट फोकस करबे किंतु एटा पूरा साइकिल टा होची पाखा पाखी मोर देन 1 ईयर तो से 1 ईयर फोकस रे रहिबा आ पढिबा जेमति कहउतला एटा गोटे मैराथन रादर देन एटा गोटे स्प्रिंट हिसाब रे सो ए मैराथन रे कोन माने गोटे पिला भितरे कोन कैरेक्टर रहिबा दरकार और माइंडसेट रहिबा दरकार टू विन दिस मैराथन so mu first कहतली it is most important to have a plan B while you are preparing but से plan B रा भी माने pros and cons अछि because plan B आपन गोटे mental support बा safety net वाला गोटे दे परिबो but at the same time do not let your plan B dilute your preparation of plan A तो माने जेमति सर कहले कि माने शॉर्ट टर्म एग्जाम्स गुडा को जोटा कंप्लीट सपोज हमरो एस पिला आसले कि मझिरे एटा तो होनी कोन हबो न हबो मझिरे 2-3 मास माने छाडी दोछन सीजीएल पे प्रिपेयर करथुन तापरे ना सेटा को ठीक रे फोकस करि परले ना एटा को ठीक रे फोकस करि परले सो एटा मु कहबे कि सिविल सर्विस माने गोटे बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविल सर्विस हला आपण जदी थॉरिटी सिविल सर्विस पई 1 ईयर हला 2 ईयर हला बहुत डेडिकेटेड वे रे प्रिपेयर करिथिबे it is at least I can say that आपण बाकी एग्जाम्स गुडा को माने प्रिपेयर करि परिबे बिकॉज़ सेटा 90-95% कवर हे ही जाय तो आपण सिविल सर्विस को फर्स्ट माने भाबंतुनी कि सेटा मु जस्ट पढिबी हेलानी प्रीलिम्स तो मु छाडी के आउ कोन करिबी सो सेटी इंट्रोस्पेक्ट आपण करिया को तो मु भूल कोन कली सो दैट मु क्लियर करि पाले इंस्टेड ऑफ जंपिंग फ्रॉम वन एग्जाम टू अनदर hopping from one exam to another because एमती भी जाय पर आपण जदी से क्वालिटी टा नथिबो ऑफ डेडिकेटेडली स्टडीइंग फोकसिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग मे बी से सेकंड एग्जाम बा शॉर्ट टर्म एग्जाम रे भी से आपण माने से सेम फेट आपण फेस करि पारंती सो फर्स्ट आई वुड से प्लीज हैव अ डिसिप्लिन टाइम टेबल एंड आपण जदी सेटा माइंडसेट रखिचंती एंड सर भी कोंती कि आपण जदी भाबिचंती करियो माने एई वर्ष रैंक नै कि आसीबे सर यूजुअली कोंती तो सेमिता माइंडसेट रे पढिले आपणकर माने एनी एग्जाम यू कैन क्रैक for that you have to have dedicated mane timeline gote study plan gote routine gote and also mental health bhi apna your care nebe so yes focus on plan A
with dedication plan B C D जदि भी थिबो that will happen on its own. आ गोटे माने बहुत पिलांको मार्क करे जे पर्टिकुलरली प्रिलिम परे सेटा गोटे टाइम थाए कि मु पढेली 5 मास थर प्रिलिम हेउनी हेलानी सेठी गोटे पूरा एनर्जी टा हमर ब्रेक हे जाय एंड पर्टिकुलरली जेते रिसेंटली प्रिलिम रो रिजल्ट बाहर छि तो ता भितरे बहुत पिला माने फ्यू मार्क रो सपोज कटि जाय छंती तो सेमानको पई जो नेक्स्ट ईयर पई हला कि तो तांको पई ए जो फेज टा हम जो कहले ए जो डरमाट फेज जोटा रहिला हमर पर्टिकुलरली ए टू अनलेस अनटिल हमें रिचार्ज होबा पे गोटे टाइम लागे मे बी 30 डेज और माने दिमाग से 1.5 मास लागि जाए तो कोन माने केमती ए थ्रू माने हमें ए डिमोटिवेशन केमती बाहर के आसीबा जो माने कि रिसेंटली जो माने कर प्रीलिम सपोज हेनी तांको पई कोन तमरो वर्ड्स Okay, so for those people specifically जो माने unfortunately ये वर्ष prelims करि पारना दिखले तो irrespective of केते number attempt रे मु माने मु कहि परिबी कि at least start preparing for your mains right now because आप unless otherwise आप चिंता करछन कि prepare माने journey रू ही माने quit कर देबी that is a different thing. I cannot comment on that but जदि आप सर्विस रे माने preparation रहबा को चाहछन्ती and you want a service then please focus on mains preparation currently. I would say till at least October November pakavaki upon next 4-5 months focus on your mains preparation because mains ta hele it will help you in two ways. First upon ka prelims next year jodi mane prelims debe upon गोटे माने रिगरस वे रे मेंस एमते कवर करथिबे कि 50-60% प्रीलिम्स ही आपन को सिलेबस टा कवर हो जाइतो बिकॉज़ एनालिटिकल अप्रोच जेटा हम फर्स्ट कहथि सेकंड वे एमती हेल्प करिवो कि आपन गोटे कॉन्फिडेंस दबो जेतले नेक्स्ट ईयर आपन को प्रीलिम्स क्लियर हे जिवो जेतले मेंस रो बर्डन टा आपन ऊपर नथिबो मे बी लेट्स से एथिक्स बा ऑप्शनल बा एसे टा आपन केते भल से कर देथिबे कि लागो कि अच्छा आई विल जस्ट नाउ नीड टू रिवाइज ऐड सम वैल्यू एडिशन वैल्यू कंटेंट एंड एनरिच माय ऑलरेडी नोट्स and then I can maybe clear. So निजको burden टा केमती कमेबे तबे प्लानिंग टा एबे टू करबा को पड़िबो. So that is known as strategic planning. So strategic planning 1 year पई आपण माने 1 year ahead journey पई आपण चिंता करिवे एबे टू and that will consist of preparing for mains right now especially for those aspirants. Okay, and now we come to the final stage like our interview you have secured 166 जोटा कि second highest माने OPSC interview रे and you are very mane intelligent jodi kaiba academic wise you are very strong mane NIT Rourkela puni Italy ru MS so after that left the job so tomara interview experience kemti thila and tame ke bhabithila ki nahi moro second highest mark asibo or ei bhaya board mote bhala mark debo so moro actually interview experience ta bahut unique thila in two ways. गोटे हला कि मोर इंटरव्यू मते इंटरव्यू रे I did not feel it was administrative service about civil service interview. मते लागला गोटे engineering service interview because the chairman I won't take the name. The chairman was himself or herself से जो technical background रो थिले and he was or she was from energy department only. तो सीए माने इंडल्ज करथले जेतल देखले गोटे कैंडिडेट टे जहार माने एजुकेशनल बैकग्राउंड क्वाइट यूनिक एंड डिफरेंट अछि तो सीए माने बहुत चाहितले मते डिग करया पे मते टेस्ट करया पे कि मु मोर प्रीवियस नॉलेज जोटा मु छाडी के आसी सेटा भूली निते एंड सेटा आई थिंक समस्त पे एप्लीकेबल हबो आपण जो भी स्ट्रीम रा आछंती कॉमर्स ह्यूमैनिटीज अकाउंटेंसी इंजीनियरिंग सेटा आपण प्लीज रिफाइन एंड फर्निश योर नॉलेज ऑन योर बैकग्राउंड फर्स्ट बिकॉज़ आपण बैकग्राउंड जदी से नॉलेज टा आपण जदी कमजोर हे गला तो से माने गोटे हिंट पाइ जिवे कि से जो माने कामडा करूछि पाठडा पढछि बहुत माने लैकेडाइसिकल अप्रोच रे करूछि लूजली करूछि सेटा तो फर्स्ट थिंग मोर सेटा थिला एंड जेतु मोर माने मास्टर्स भी थिला तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू आंसर दोस क्वेश्चंस एंड सेकंड वे रे यूनिक थिला बिकॉज़ मोर वन ऑफ द लोएस्ट टाइम इंटरवल ऑफ इंटरव्यू थिला मो माने मो इंटरैक्ट कोथली मोर फ्रेंड्स मन को सहित से मानकर 25-20 मिनिट्स एम सब होतला एवरेज रे मोर थिला इट वाज 12 मिनिट्स इंटरव्यू so mo goli and then samaste didi hardly question pachale panel members and se mane they felt like se mane se interview pore mo jani parli ki they were not testing the knowledge se mane test korchanti ki kete confident roi parchi pilata se kete nijer background ko nei kri future ko forecast kari parchi kemti administration nijer background ta use kari pari so eta any background and any subject ପାଇଁ ki eta applicable so please focus on that and secondly mo actually kaya ko bhuli geli ki ei civil service the tinta stage ruhe prelims mains and interview but I think the most important and most efficient way of preparing is to prepare in reverse interview mains and prelims I have a reason for this
देखो तो आपण जानथिबे इंटरव्यू इज नोन एज पर्सनालिटी टेस्ट इन माने ऑफिशियल टर्म्स एंड इज नॉट इंटरव्यू एंड आपण जानचंती पर्सनालिटी टा इट इज नॉट बिल्ट ओवरनाइट you have to build your personality from day one itself when you embark on this journey तो पर्सनालिटी माने जो कॉन्फिडेंस जो पॉजिटिव एटीट्यूड समस्त देखि कि स्माइल करबा बा गोटे ऑप्टिमिज्म टे आपण देहरु बाहरुतबो सेटा आपण प्लीज डे 1 नु कल्टीवेट करंतु प्रिपरेशन भी आपन को हेल्प करबो सेकंड जेंति मु कहली मेंस को असंत रिवर्स ऑर्डर रे मेंस प्रिपरेशन जदी आपण करिवे सिलेबस वाइज एक्सटेंसिव एग्जॉस्टिव वे रे देन आपण को मेंस रो भी प्रिपरेशन होची प्रीलिम्स रो बर्डन टा भी आपण 50-60% एटलीस्ट कवर करि पड़छंती and then you should come down to prelims so preparation should be in the reverse order that is what I believe and interview ପାଇଁ କି ତ obviously ଯେମିତି sir କହିଲେ please focus on your background and stay confident optimistic and if and as they say fortune favors the brave so if you have prepared with dedication then obviously destiny will drag you into your dream service ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର last question ରହିବ ବହୁତ ପିଲା ଆମେ जे देखिबा आर कंपोजिशन देखिबा सिविल सर्विस प्रिपरेशन नो बहुत पिला अछंती रूरल बैकग्राउंड रो बहुत पिला अछंती नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड रो बहुत टेक्निकल आमे एथिरे देखि जे इंजीनियरिंग पिला भी अछंती एथे आमे देखुचे सिंपल सोशल साइंस और ग्रेजुएट जो माने कि आर्ट्स करिसंती साइंस पिला अछंती मु देखुची एग्रीकल्चर भी पिला हमरो ओएट रो अछंती वेटनरी पिला अछंती इवन इफ मु देखि पिला नर्सिंग सेक्टर रो भी पिला से करछंती आयुर्वेदिक सो ऑल वेराइटी रो पिला अछंती तेनु ए जो सर्विस में जतरा हमें पढ़िया पिला गोटे फियर थाए ना मु इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो मु कोन आर्ट्स हिस्ट्री ज्योग्राफी पे पढ़ी परिबि कि किबा जो माने आर्ट्स बैकग्राउंड रो से माने भाबंती जे नाही मु कोन एमटी मैथ फैथ अछि सीसार करि परिबि कि तो ए भले जो हमर गोटे कंपोजिशन हमें थाए जे सिविल सर्विस पई हमें जदी ओवरऑल देखिबा पूरा रूरल एरिया रु जे नाही मे बी रेवेन्सा हो आईआईटीज हो और हायर यूनिवर्सिटीज हो जो माने पढ़ी थिबे से माने ही करि परिबे मोर तो कैरियर सपोज एवरेज स्टूडेंट मु एटा करि परिबे कि करि परिबे ए गुडे माइंड रे गुडे क्वेश्चन चली थाए जे तम पर्सपेक्टिव कोन जे सिविल सर्विस प्रिपरेशन पई को भलिया पिला माने तांको पई तमर कोन हमर ओपिनियन सर जोडा कहले कि माने किछटा सेट ऑफ स्टूडेंट्स एमती थांती एस्पिरेंट्स थांती जो माने भाबंती कि मोर टू बहुत डाइवर्स लेवल रे अलगा लेवल हायर लेवल रे सिविल सर्विस तो तांको पई मोर गोटे मेसेज रहइबो कि यू आर व्हाट यू थिंक एंड यू आर योर बिगेस्ट सपोर्टर एंड यू आल्सो आर योर बिगेस्ट ऑब्स्टेकल तो आपण जदी माइंड ता सेति कि रेजिलिएंट अछि तो आपण जानिचंती कि माने से लेवल इज नेवर द हर्डल it is who you are as a person आपण केते डेडिकेशन सह सेटा करि परुचंती सेही जर्नी टाकू because 1.5 years is not a very short period of time and also people जो माने माने टिके फाइनेंशियली डिसएडवांटेज्ड फैमिलीज बा बैकग्राउंड्स रो आछंती सेमान को पई तो डेफिनेटली इट इज अ डू और डाई अपॉर्चुनिटी भले तो तांको पई इनफैक्ट इट इज मोर इंपोर्टेंट टू बी मोर डेडिकेटेड एंड मोर रेजिलिएंट because if they want to change the lives of their society their family and the economy as a whole then तांको तो obviously बहुत resilient हवा को ही पड़िबो and preparation to सेतिक dedication करय पड़िबो coming to the fact that बहुत diverse field रोचंती engineering रू plus agriculture social sciences रू रोचंती civil service provides everyone a level playing field I believe that and in reality जदि आपण देखिबे engineering पिला माने आसी कि भी माने आर्ट सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज पढी कि माने डोमिनेट करूचंती sociology बा other social sciences पिला माने भी आसी कि they are also able to माने conquer those questions which we find difficult so तो हेति पे कि level playing field हे जाय because से माने तांकर weak areas टाको identify करि पारंती ता ऊपर काम करंती सेति के डेडिकेशन रे से माने निजो को इवॉल्व करंती कि एटा मोर weak areas मु या ऊपर काम करबी एति के टाइमलाइन मो पाकर अछि and then मु जेडो कहली strategic planning so strategic planning not only for your माने attempts but also for how much you are covering how much you have left the syllabus see माने phase so definitely माने level playing field with your efforts will only ensure that you get success and बाकी जोटा level अछि कि difficulty easy advantage disadvantage एटा mental barriers होता तो you have to overcome that okay so final question more जो whole civil service aspirant fraternity जो माने प्रिपेयर करूछंती स्टेट पई हो और सेंटर पई हो तो से माने को तमर कोन मेसेज वो मेसेज फर्स्ट ऑफ ऑल रहइबो कि अपन बहुत माने यू आर वेरी माने टैलेंटेड पीपल विथ मोर गट्स इवन देन पीपल हु हैव क्विट फ्रॉम डे वन इटसेल्फ माने सिलेबस देखि बहुत जण क्विट कर दियंती बट अपन यू हैव कम टू दिस फेज यू हैव टेकन दैट डिसीजन टेकन दैट लीप ऑफ फेथ सो दैट इज इटसेल्फ वेरी कमेंडेबल
And second thing I would say is be true to yourself, because at the end of the day आपण भाबिबे कि मु माने प्लान बी को जंप करबी किछि भी अलगा किछि कर देबी सिविल सर्विस हबनी तार हे गेला से डिमोटिवेटिंग फैक्टर उडा को आपण माइंड को प्लीज आसीबा को देबेनी, because at the end of the day it is equal for everyone. You are what you think. आपण जदी भाबिबे कि मु ए जिंसटा करि पारुची बा मो सांग करि पारुची, then why can't I? मु इनफैक्ट माने तारठू माने अन्य एस्पिरेंट्स मानकर सहित आई वुड से ब्रिंग दैट कोलैबोरेशन, because maybe ए भितर एंती थिबे जो मानकर GS1 टा गोटे माने स्ट्रांग फैक्टर टा थिबो, CSAT गोटे स्ट्रांग फैक्टर कार थिबो. So if you bond very well among yourselves, then that community will rise together in good spirit. So that is one thing that I would say. And obviously give your mental health as much priority as your the preparation, the physical preparation, the struggle that you have put in through this journey, and trust yourself. Obviously, if you have put in the hard work, then success will be yours. That is all I have to say. Thank you so much, Om. Really, माने ओम को जते फास्ट देखिथिले माने ଗୋଟେ पॉजिटिव वाइब्स मोरो तांका प्रोफाइल हिला तांका पर्सनालिटी जेला जे जणे ऑलरेडी एते सब किछि जेतल तमे ଗୋଟେ ड्रीम देखुछ लाइक तमे ऑलरेडी NIT राउरकेला में पचारथली कि तमे कैंपस रे काहे कि बसलेन कि मते बसिबारे नतला मो ड्रीम टा गोटे अलगा थिला तापरे इटली रे जाई कि MS करबा तापरे आसीबा सिविल सर्विस गोटे जर्नी तेनु तमे जदी गोटे जिंस स्वप्न देखिछ गोटे ड्रीम देखिछ ताकू भाव जे ता पई फुल एफर्ट दबो ता पई डेडिकेटली जदी तमे लागुछ आउ जदी थरे माने सेटबैक हेई कि गिव अप न करी कि जे पुणी आउथरे किया है कि आउथरे लडुछ डेफिनेटली तमे मे बी टिके डेरी रे सक्सेस मिलि पारे किंतु डेफिनेटली मिलि तो एथरु आमे देखुचे जे आउ सब बेले तम निज ऊपर भरोसा रखो जदी दुनिया रे तम निज ऊपर तमे निजे भरोसा न रखिबो आउ काहे कि तम ऊपर भरोसा रखिबो जदी तम ऊपर तमे निजे भरोसा रखुनो तो अन्य काहे तम ऊपर तेनु सेही हम कहली जे जेतरे प्रिपरेशन करूछ दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ हमें कहबा जे जते बेले तमे एथिरे एते पेन प्रेशर तमे नबो जोटा कि सेते तम साथरे में भी वेरी फ्यू लोक ठिया हेबे किंतु तमे सक्सेस पाई जाओ समस्त फुलमाल पकेउ तम पाखु आसे तेनु तम स्ट्रगल टाइम टा होची तमर आ तमे ताकू माने जते स्ट्रांगली रहिबो माने प्रिपरेशन करबो आ स्टिक टू रहिबो की कोन कहूची की कोन भरोसा रखू न रखू मो ऊपर मो भरोसा रखिबी आ को रीजन पई तमे आसीतिलो जे हमें कहले सिविल सर्विस पई तम पाखरे गोटे रीजन रहबा दरकार एठी पई मु करिया को चाहूची ताल से रीजन टा मे बी हमें कहिदलु मे बी इट विल टेक 4 or 5 days तुमको मोटिवेट करिवो किंतु तमर जदी वाई क्लियर अछि जे मु एठी पई करिया को चाहूची मो घरर सिचुएशन हो मोर सिचुएशन हो कि मु जो डिफिकल्टीज अछि ताको बाहरिया को चाहूची से रिजल्ट ता तुमको ड्राइव करिवो नेक्स्ट 1 year पर्यंत कंटीन्यूअसली तुमको ड्राइव करिवो तुमको तमे फेल हैला पर भी तमे जदी गिव अप करू न जे मु 100 थर पढले भी 101 थर उठी कि ठिया है कि लड़ी भी ताल तमे लाइफ रे ए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नो लाइफ रे जो भी डायरेक्शन रे अच्छा सक्सेसफुल डेफिनेटली हबा ही हबा सो सेइडा माने बहुत पिलांग को हमें इंस्पायर हो एंड रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम होम आल्सो कि एते माने बेटर अपॉर्चुनिटी छाड़ी कि से डेडिकेटेड सह हमर सिविल सर्विस पई प्रिपेयर कले एंड फाइनल तक गोल रे पहुंचले. So thank you so much and wish you all the best and thank you for coming to Kalinga's platform and Kalinga talk. And जो माने करा किछि डाउट अछि और तमर किछि क्वेश्चन अछि you can ask तार किछि डाउट अछि you can raise your question. Online maybe टिके साउंड आसुनी you can go माने write your question in the message box so we can take them. टिके Note making. Okay, note making केमति थिला हां Okay, so data part acha apn question ra first hela note making with respect to prelims and mains. So mu koibi definitely integrated approach hi best because apna prelims is what you live every day, mains is what you think through those days.
सो आपण मेंस रो आपण धरतु एग्रीकल्चर गोटे पार्ट अछि जेमति कहली आपण एलिनो पढुचंती न्यूज़पेपर रे ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे बोथ इंग्लिश एंड ओडिया रे आसुची आपण एलिनो पढुचंती तापर आपण जेतले प्रिलिम्स पई की ज्योग्राफी माने स्टार्ट करचंती 8th 9th रो तो सेतले सॉइल्स एंड क्रॉप्स विषय रे पढुचंती एबे ए छोटे छोटे जिंस करंट अफेयर्स स्टैटिक and your newspaper and whatever you are reading, this combines together to form your main topic of agriculture. So upon jodi segregate padhibe, it is your loss because it will take more time. Upon pore second time mains padla first bhuli jaithibe, so integrated approach is the best. Second upon question thila revision upare. So revision actually mo pai personally speaking it was a staggered manner thila. More plus point thila GS2 ta polity, constitution and social justice se part thila. तो मु कोन करतली से गुडा को मु एंश्योर करतली कि जते जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करी के सेटा को मु थर्ड रिवाइज करी के साइड रे रखिबी मोर वीक पॉइंट टिके टू सम एक्सटेंट थिला GS1 रो सोसाइटी रो टिके सोसाइटी पार्ट तो मु कोन करतली से सोसाइटी पार्ट को मु ताकू माने कंटेंट एनरिचमेंट करतली फर्स्ट बहुत सारा इंटरनेट सोर्सेस रो मु तार स्टैटिक पार्ट पढुतली बिकॉज़ कोनसी गोटे बही आपन को सोसाइटी मिलिबनी प्लस एवरीडे इट इज इवॉल्विंग मैरिज गोटे डिवोर्स गोटे फर्टिलिटी लेवल्स गोटे तो सबुडा माने चेंजिंग डायमेंशंस तो मु सेटा को कोन करतली रिवाइज माने थर्ड पढुतली एवरी 2 डेज रे मु ताकू रिवाइज करतली सो जोटा मो पाई मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट थिला सेटा एवरी 2 डेज करतली GS2 टा फॉर एग्जांपल सेटा मो एवरी 3-4 डेज रे थर्ड रिवाइज करतली एंड देखुतली से मजरे किछि कंटेंट नुवा आसीछि कि नुवा सुप्रीम कोर्ट केस आसीछि कि सेंता इंक्लूड करतली सो रिवीजन शुड accompany your studies but depending on the strength of your subject say particular GS. ओके गुड जणे क्वेश्चन पचाउछंदी सर राइटिंग ऊपर बेसी ध्यान देबा ना रिवीजन ऊपर बेसी ध्यान देबा Okay, so now obviously revision comes after writing and in fact सेटा ଗୋଟେ cyclical manner रे चले जदि आपण कोचंदी मेंस पई की जदि आपण कोचंदी तो मेंस पई की राइटिंग फर्स्ट यू हैव टू कवर द सिलेबस बिकॉज़ सिलेबस रो आपण नोट्स बनेला पर सेटा वैल्यू एडिशन हबो एंड आपण सेटा को रिवाइज करबे पीवाईक्यू देखि कि जदि से पर्टिकुलर टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी रो लेट्स से एतरो नक्सल मुक्त भारत हेछि 31 मार्च 2026 रे होम मिनिस्टर जेमति कहिथिले तो सेटा आपण सेटा तो टॉपिक गोटे नक्सलिज्म एंड सब वर्ष पढि आछि बट डिफरेंट डायमेंशंस रे एजेंसीज पढुछि रीजंस फॉर नक्सलिज्म पढुछि आ कोन स्ट्रेटजी जेमति गवर्नेंस ऊपर पढुछि तर आपण नक्सलिज्म ता थर जदि तार टॉपिक ता कवर करले आपण से पीवाईक्यूज 5टा जदि देखिबे 5 इयर्स तो 5 डायमेंशंस आपण कवर हेजिबो एंड यू राइट आंसर्स ऑन दैट सेटा को कला परे देन यू विल हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नक्सलिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जोटा कोंती then you can revise them अपन प्लस मॉक टेस्ट भी देबे ऑब्वियसली जो भी इंस्टीट्यूट रे एठी जोटी भी दोतबे ऑनलाइन सेडी नुवा क्वेश्चन सेट आसीबो तो ताकू भी भाबिबे कि सेटा गोटे प्रिपरेशन रे माने गोटे पिलर गोटे सेटा गोटे नुवा डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन आसी पारे तो फाइनली एट द एंड कल्मिनेट करबे पूरा को रिवाइज करिके सो स्टडीिंग देन मेकिंग नोट्स राइटिंग ऑफ पीवाईक्यूज देन रिवाइजिंग देम ऑल टुगेदर दैट इज अ फोर्थ. Can you please repeat the name of the current affairs site? Okay, sir कहले current affairs site जोटा कहले गोटे कहउतले हमरो फर्स्ट पोस्ट कहउतले जोटा कि न्यूज फर्स्ट पोस्ट हे परिबो अदरवाइज तमे गवर्नमेंट रो जदी न्यूज चैनल देखिया चाहौ संसद टीवी भी तमे देखि परिबो जोतरे कि ओनली भलो भलो डिस्कशन आ पॉलिसी ऊपर हो पूरा मते लागे कि सिविल सर्विस पाई एई चैनल टा हेछि बहुत पिला फॉलो करंती फर्स्ट पोस्ट हला संसद टीवी गोटे रादर देन एई जो माने बेसी पॉलिटिकल न्यूज देखिबा अपेक्षा जोटा कि जो धीरे जने एक्सपर्ट कोच तर तमरो इंडिया जो यूएस रो रिलेशन ऊपर चली छै एंड जने हमरो एम्बेसडर टू यूएस जने बसी छंदी कोचन तांकर पॉइंट्स गुडा को वेरी वैलिड रहे आ वेरी ऑथेंटिक रहे तो जोटा कि तुमको वेरी हेल्पफुल हे परिबो किबा तमरो ओडे इन डेप्थ आसे हमरो तमरो संसद टीवी रे पूरा गोटे टॉपिक ऊपर डिटेल ले मते त बे लागु छी हिस्ट्री टा भी पूरा से माने पढौ छंदी पॉलिटी पूरा पढौ छंदी एवरीथिंग ता भितरे तमे संसद टीवी भितरे देखिबो आई विल से माने सेंड करबी तुमको सब जो वीडियो गुडा कासे बहुत बढ़िया भाबे दिया जाय छी एंड डेफिनेटली सेटा गोटे तमे फॉलो करि परिबो एंड पीआईबी भी तमे फॉलो करि परिबो एंड मु कहबी जे मु काली भी हमर मेन जो माने आंसर राइटिंग करू छंती मु तांको कहबी जे तमे दीटा ट्विटर साइट भी फॉलो करो सीएमओ ट्विटर साइट हमर ओडिसा रो सीएमओ ट्विटर साइट आ mygov.india तार ट्विटर साइट सेहिरे कोन हुए ना तमरो एते पेपर पढिया को पड़ेनी जोटा हमर नुवा किछि इनिशिएटिव भेला तार केजी टू पीजी गोटे माने फ्लेयर्स रे और तमर गोटे
कट आउट रे पूरा बढ़िया से तार पॉइंट्स गुडा का पिक्चर सह देता है कि हमर सीएम किसान हे गला और कन्या जो कन्या सुमंगल योजना हे गला तो जो जोड़ा हो स्मॉल स्मॉल वीडियो कोन इनिशिएटिव 30 सेकंड और तमर 1 मिनिट भीतर गोटे पूरा पिक्चर टाकू ऑल इन्फॉर्मेशन स्कीम सब थाए तेनु तुमको सेटा जोटा कि मेन आंसर राइटिंग के तुमको बहुत हेल्प करिवो जोटा कि mygov.india हो सीएमओ ट्विटर साइट हो टिके जोड़ा गवर्नमेंट रा साइट ऑथेंटिकेटेड साइट जोड़ा तो सेटा को डेफिनेटली तुम प्रिपरेशन तमे ऐड करिवो रादर देन तमे बसी की अर्णव गोस्वामी न्यूज चैनल देखिवो और आउ कहरो देखिबा अपेक्षा नै सेगुडा को भी माने तमे दरकार किंतु तुमको लागिबो जे मोर कोउड ना कोउडी तार माने तमे भी बायस्ड हेजिबो गोटे साइड में देखिले जे मु आ पटे ना ता पटे तेनु बायस्ड हेजिबो तेनु गोटे न्यूट्रल को देखो एंड जोडा ऑथेंटिकेटेड सोर्स सेगुडा को फॉलो तो जेमती मु स्टार्टिंग कहतली कि सोशल मीडिया फॉलो करतली बट बहुत माने फिल्टर्ड वे रे को चैनल्स बा साइट्स बा पेजेस थोड़ा स्पेसिफिकली फॉलो करे दरकार बहुत ओडिशा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रो तो से एजेंसीज एंड से ओडा को फॉलो करंतु बिकॉज़ सेठी आपन को पॉइंट्स माने गोटे पर्टिकुलर टॉपिक को से पॉइंट वाइज एनालाइज करन जोडा अपन डायरेक्टली रेप्लिकेट करि परिबे मेंस एंड स फैक्ट्स और गोटे क्वेश्चन मु रहइबो माने मु सपोज सोशल मीडिया को जाउछि माने सोशल मीडिया वर्तमान एते डाइवर्सिफाई आ एते डिस्ट्रैक्टेड हे गलानी माने मु जाईछि गोटे कथा मो प्रोफाइल देखिया पई कि सिद्धु बाहरिया पई जाईथिली भाबी कि 5 मिनिट बाहरछि 50 मिनिट पर तो से थिरु केमती माने हम जानि ने जे सेही थिरे टाइम केते बळे पळे जाय एडा असला आउट रील्स देखिबि से देखिबि तार टिके पोस्ट देखिबि एमती देखि देखि हमर माने केते बळे माने सेहीटा गोटे हम जानि ने किंतु सेटा गोटे 2 घंटा 3 घंटा माने 2 घंटा 2.5 घंटा पर डे हम नै जाउछे एंड आल्सो एटा गोटे हमर कोठी अटेंशन टा को डाइवर्ट करि दोछि तो सेथरु केमती हमें माने एटा तो गोटे माने निशा खाइला बेले मते लागे कि सोशल मीडिया टा गोटे निशा खाइला बेले कोन कोन तो सेथरु केमती एई प्रिपरेशन फेज पर्टिकुलर केमती कंट्रोल करे so mane as you rightly put it social media mane is a perfect example of negative impact of globalization actually se jo especially real culture joda sir kohile but on a serious note social media ra se use karibar bi gote fine line achi tar मु पर्सनली एक्चुअली गोटे माने ऐप टे यूज करथली जोटा कि माने आपन को टाइम टा सेट करथला सोशल मीडिया रो एंड मु यूज करथली सोशल मीडिया को स्पेसिफिकली सेही साइट को जोवा पई जदी मते किछि वैल्यू बा एडिशन बा कंटेंट खोजवा पई अछि आ ऑब्वियसली आपण माने मु कहि परिबिनी कि माने आपण निजर सेल्फ कंट्रोल टा तो ऑब्वियसली रखिबा को ही पड़िबो बिकॉज़ आपण से जर्नी रे अछंती तो आपण जानिबे कि को जिंसडा मो पई फिल्टर आउट करबा दरकार कोडा इंपोर्टेंट कोडा पूरा यूजलेस कंटेंट तो हाँ अपन जदी कहबे एंटरटेनमेंट पर्पस बट आल्सो एंटरटेनमेंट पर्पस पई यू ऑप्ट फॉर एनी आउटडोर और फॉर एनी मोर प्रोडक्टिव एंगेजमेंट्स रादर देन सोशल मीडिया रो रील भाला शॉर्ट्स ला जा भी हला सो तो फिल्टर आउट करंतु आपण माने यूजफुल फ्रॉम योर यूजलेस and preparation is simply one self control I think I used technology for putting the break sir for men how many days we should cover the current affairs gote question apre a gote sir history geography politics kemiti पढुथिले आज साइंस स्टूडेंट सेगुडा को टिके प्रॉब्लम आपन को लागुथला के ओके सेकंड क्वेश्चन द फर्स्ट मको होची साइंस स्टूडेंट हिसाब रे इनफैक्ट से अंडरस्टैंडिंग ता बहुत इजी हे जाय पॉलिटी रो बिकॉज़ पॉलिटी इज लाइक मोर टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ व्हाटएवर ऑफ पॉलिटिकल साइंस माने हमें अपन जदी लक्ष्मीकांत रे ऑब्वियसली स्टार्ट करबे प्रिपरेशन जोटा कि फर्स्ट क्वेश्चन कि अपन केनतिया पढथिले बुक तो फर्स्ट लक्ष्मीकांत रो अपन स्टार्ट करबे लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी and history and geography जदी से कहले as I said कि start from foundation if you are new to this journey start from foundation books and materials and then gradually